जन्म जन्म रोग मिटाओ, अजाइब दुखी हो जाई बारी, देखी जाने सार सावन दी, सावन केरिया रंगा बिचरासी, देखी जाने सार सावन दी, सावन केरिया रंगा बिचरासी, देखी जाने सार सावन दी, सावन केरिया रंगा बिचरासी, देखी जाने सार सावन दी. Page 94. Avo Satguru Avo Ji Dukiya De Naradam Tahamo Diladi Tapasha Bujahamo Satguru Ji Avo Avo Satguru Avo Ji Dukiya De Naradam Tahamo Diladi Tapasha Bujahamo Satguru Ji Avo Name tere vich beti haradam teri adamanaha Visaragiya min kana pina tere hi gunagaha Name tere vich beti haradam teri adamanaha Visaragiya min kana pina tere hi gunagaha Avo fera avo ji Amrit jam pilao Diladi tapashab jahavo Satguru ji Avo Satguru Avo ji Nukiya de Daridamitaho Diladi tapashab jahavo Satguru ji May papi aparati data tu bakashin yara Dukiya de dukadur karanle de bo apasahara May papi aparati data tu bakashin yara Dukiya de dukadur karanle de bo apasahara Avo Satguru Avo Ji Ganga mana badiya mano Diladi tapashab jahavo Satguru ji Avo Satguru Avo ji Dukiya de daridamitaho Diladi tapashab jahavo Satguru ji Tere khai puraniya te daradare kadamat kahava Janarahi merasai langiya deone usi kahava Tere khai puraniya te daradare kadamat kahava Janarahi merasai langiya deone usi kahava Avo Satguru Avo Ji Ruha Sakakanda Pujahavo Diladi Tapashabu Jahavo Satguru Ji Avo Avo Satguru Avo Ji Dukiya De Daridamitaho Diladi Tapashabu Jahavo Satguru Ji Avo Megariva Ajaiva Asaya Tu Shakir Pala Piyara Mera Koi Naman Jane Sabatera Kelandiyara Megariva Ajaiva Asaya Tu Shakir Pala Piyara Mera Koi Naman Jane Sabatera Kelandiyara Avo Satguru Avo Ji
अपने जी चरण ही लावो, दिल दी तप शब जाओ, सतगुरु जी आवो सतगुरु आवो जी, दुखिया दे दर मिटावो, दिल दी तप शब जाओ, सतगुरु जी आवो सतगुरु आवो जी, दुखिया दे दर मिटावो, दिल दी तप शब जाओ, सतगुरु जी। Babaji will give the morning meditation talk, and after that he will give us a practice of the Simran. So all those who are non-initiates, they will have to leave the room for 5 minutes. बाबाजी अभी जो मेडिटेशन टॉक देंगे उसके बाद थोड़ा सिमरन रटाएंगे. वो जब हम बोलना है ना 2 मिनट के लिए, हाँ, बोलने के बाद तो मेडिटेशन टॉक होने के बाद जिन्होंने भी नाम नहीं लिया है वो एक 5 मिनट के लिए हॉल छोड़ दीजिए, और फिर 5 मिनट के बाद सब बैठेंगे तो अंदर आ जाइए. 2 मिनट सब लोग बोल के ध्यान बैठेंगे ना तब आ सकते. एंड लाइव फीड बंद करेंगे. हाँ, स्पीकर भी नहीं होगा, तो सिर्फ बाबा जी ऐसे ही बोलेंगे. फिर अभी नहीं, अभी नहीं है, बात करने के बाद. अभी चालू है. Also, if anyone has the mobiles switched on or recording, everyone is requested to switch off the mobiles. हाँ, जिन्होंने भी मोबाइल में मोबाइल ऑन है या रिकॉर्डिंग करते हैं या वीडियो निकालते हैं तो वो जरा ऑफ कर दीजिए बाबा जी का टॉक होने के बाद. हाँ, क्या हाँ बंद थे. आप कन्नड़ में बोलना है? कन्नड़ नहीं, कन्नड़ में नहीं. कौन नहीं, कन्नड़ वाला सबको मालूम. नाम तो सब एक ही बोली है, एक ही भाषा है नाम. नहीं, मतलब अनाउंस करने के लिए. हाँ नहीं, कन्नड़ में सब नाम वाले. काल ने जब ये 3 लोक का रचना किया तो रचना जीव के बगैर कोई शोभायमान नहीं थी. When Kal created these three worlds, without the souls, uh, there was no fun in in these three worlds. ये सब 3 लोक का रचना खाली डब्बे के समान था. तो निरंजन ने एक पैर पे खड़ा होके 70 चौकड़ी युग, एक चौकड़ी 4 युग,
70 चौकड़ी युग एक पैर पे खड़ा होकर उसने सतपुरुष का ध्यान किया, तपस्या किया। जब सतपुरुष प्रसन्न हुए, क्या चाहिए? तो जीव भंडार चाहिए। So these three worlds were without the souls; they were just like a box, and there was no meaning in it. So Niranjan, he meditated for 70 Chokri yugas. One Chokri yuga is 4 yugas. So that way he meditated on 1 foot for an estimated 70 Chokri yugas and requested for souls. तो जब सतपुरुष प्रसन्न हुए, क्या चाहिए? जीव भंडार चाहिए। तो उन्होंने एक छोटा सा जीव भंडार जो सतलोक से नीचे और भंवर गुफा के पास था, तो उन्होंने निरंजन को सौंपा। निरंजन को जीव भंडार सौंपने के पहले पहले जीवों से सतपुरुष ने पूछा कि इसने नीचे 3 लोक का रचना किया है, आप लोग वहां जाने के लिए तैयार हैं? So when he prayed to God Almighty and asked for the souls, God Almighty granted him his wish, and he gave him a store of souls who were there in the Bhavar Gufa just below the Sachkhand. But before he asked all the souls to go into these three worlds with Niranjan, God Almighty asked the souls whether they would be willing to go into the three worlds of Kal, and he told them that he had given his word and asked them if they were willing to go. तो पहले जीवों से पूछा कि इन्होंने 3 लोक का रचना किया, आप लोग जाने के लिए तैयार हैं? तो 12 आने भाग जीव आने के लिए तैयार थे स्वेच्छा से, लेकिन 4 आने भाग जीव यहाँ आने को तैयार नहीं थे कि महाराज ये रचना हम सतलोक सचखंड छोड़ के माने जाना नहीं चाहते। So when he told them about the three worlds of Kal and whether they would be willing to go, then about 75% of the souls were willing to go of their own free will into the three worlds of Kal. But about 25% of them were hesitating. तो सतपुरुष ने उन्हें जवान दिया कि चलो, मैं इसने तपस्या किया है और आपको वहां अगर कोई तकलीफ होगी, आप हमारी याद करोगे तो आपको लेने के लिए हम खुद आएंगे। Then God Almighty assured them and told them that he had given his word to Kal, and he had given him a boon. So he assured them that when they go, if they are unhappy in the worlds of Kal and they pray to be released and come back, then God Almighty will come himself and fetch those souls. तो आज जो संतों की शरण में जीवे आ रहे हैं, जो आत्माएं, वही वो 25% के लोग हैं, और बहुत कम लोग आ जाते हैं जो 75% के हैं, क्योंकि वे शिक्षा से आए हैं, उनको ऊपर जाने की कोई इच्छा नहीं। So now, when we see the souls coming to the masters, wanting to get salvation from these worlds, it is mostly all of those, part of those 25% of the souls who did not want to come here in the first place. Only very few of the rest, remainder of that 75%, uh, want to get relieved from these worlds of Kal, because most of them had come willingly and they wanted to come into the worlds of Kal. और बाकी जीव दुनिया में खुश हैं, ऐसे लोग ही जो ये संतों की निंदा करते हैं और उनसे दूर रहना चाहते हैं। So, part of those souls of the 75%, they are the souls that speak ill about the masters. They want to stay away from the masters and they do not want to leave this world. तो कहते हैं जिसको परमात्मा ने जबान दिया है, और जब उनको यहाँ तकलीफ हुई, उन्होंने मालिक को याद किया, तो परमात्मा ने अपने अंश
जो कमाई करके ऊपर चढ़ाई कर रहे थे, उन्हें ऐसे महात्माओं को यानी पवित्र आत्माओं को उन्होंने ऑर्डर दिया कि जाओ जीव को चिताओ। So when part of these 25% souls, they want their salvation, they want to be relieved from this world of Kal, and they want to go back, then God Almighty, He sends those people who have already got salvation, and those Mahatmas who have got salvation, He requests and sends back those Mahatmas into this world to help these souls to get their salvation. तो कहते हैं कि आज वही प्यारे संत के रूप में दुनिया में आते हैं और आकर के अपने मालिक का हुक्म जो है कि मानते हुए जीवों का उद्धार कर रहे हैं। बाकी जो सतलोक सचखंड में चली जाती हैं आत्माएं, वो अमर देश है, वहां से लौट के आ नहीं सकती। So it is those souls which are there below Sachkhand and who have got salvation, who are free from this world. They incarnate into this world and they help the other souls to get their salvation. Because Satlok is a plane of immortality, and once a soul goes there, it becomes immortal and stays there. So, therefore, the souls which are from the lower planes, they are sent by God Almighty. तो इस तरह से वही आत्माएं जो बीच के मंडल से लौट के आती हैं और वही संत मत का प्रचार करके जो भी जीव उनके शरण में आते हैं, उन्हें उस प्रभु परमात्मा के शब्द से जोड़ के वो वहां भेजते हैं, लेके जाते हैं। So, it is those souls which are sent back by God Almighty. They come into this world and they preach the teachings so that other souls can benefit. And those souls which benefit from the preachings of such saints, they go back, they get salvation, and the saints take them back to Sachkhand. वही सत्पुरुष का अवतार कही जाती हैं, क्योंकि सत्पुरुष कभी अवतार लेके दुनिया में नहीं आ सकता। वो अमर मंडल है और जो आत्माएं भी वहां चली जाती हैं संतों की कृपा से, वो भी लौट के फिर नहीं आती कभी। Those saints who incarnate in this world, they are the representatives of God Almighty. God Almighty doesn't incarnate in this world by himself. He sends his loved souls, and they come and take these other souls back to Sachkhand, because Sachkhand is a place of immortality, and once the souls go there, they don't come back into this world. तो इसीलिए चाहिए कि हम भी संतों का हुक्म माने, अपने घर जाने के लिए तड़प बढ़ावें, वहां की आशा लगा के यहाँ की ड्यूटी बजावें, यहाँ की आशा लगा के बजाएंगे धोखा खाएंगे। Therefore, we should also make it our ruling ambition to go back to God Almighty, to go back to Sachkhand. And when we have that strong desire to go back there, we can carry about our routine and our other duties in this world, uh, trying to fulfill that desire of going back to God Almighty. But if we do it the other way, that we have the desires in this world but just want to go back, then we will not be able to, we will get deluded here. तो समय बहुत अच्छा, वातावरण शांत है, हम सो के उठे हैं, मन शांत रहता है, हमें इससे फायदा उठाना चाहिए, हम आंख बंद करके सुमरन से। So the time is good and we should make the most of it, because we have woken up and the mind is fresh, and a fresh mind is good for meditation. So we should make the most of this time. बोल। So now all those who have not got initiation are requested to